Assalamu alaikum everyone, welcome back, and we are discussing arithmetic sequences. So I want to do a few more questions with you so you're more comfortable with the topic before I move on to the other types of sequences. The first question that you have is asking to write down the next two terms in each of the following sequences. अब just looking at the sequence, ठीक है, सबसे पहली चीज़ you want to find the term to term rule so you can judge whether it's an arithmetic sequence or any other sequence. अब term to term rule अगर मैंने निकालना है तो you can see that I am basically subtracting 7 from each term, each previous term to get to the next term. How do I know? You can see कि अगर मैं 64 minus 71 करती हूँ, ठीक है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा विच इज़ -7. कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म. सो इफ आई डू 64 minus 71 I will get -7. तो यहाँ से यहाँ तक will be -7. Now this is going to be 57 minus 64. 57 minus 64 is also -7. You are again subtracting 7 to get to the next term, and you will find that it's the same in this case as well. So this is an example of an arithmetic sequence. Why? Because you are subtracting the same number each time to get to the next number. तो अगली term क्या हो जाएगी? अगली term हो जाएगी 50 minus 7, which is going to equal to 43. And then the next term is going to be 43 minus 7, which is going to equal to 36. दूसरे सीक्वेंस पे आ जाए. दूसरे सीक्वेंस में अगेन इफ़ यू वांट टू चेक इफ इट्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और नॉट, यू कैन डू द फर्स्ट टर्म्स. आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट टू टर्म्स एंड सब्ट्रैक्ट the next term, which in this case is 13, from the previous term, which is in this case is -17. So I'm going to do -13 minus 17 to get to my common difference. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -13 plus 17, which is equal to +4. Now again, if I take the next two terms, which is -9 and -13, again I will do -9. So -9 minus 13, right? So you get -9 plus 13, which is again equal to +4. So in the next sequence, you are basically adding 4 to get to the next term. Again, it's an arithmetic sequence because you're all adding the same amount each time to get to the next term. So -5, इसमें भी आप +4 करेंगे, which will equal to -1. And then again you will add +4 to -1 to get to 3. So the next two terms for this are 43 and 36, and the next two terms for this are -1 and 3. In the next part, they're asking you to, they've given you the nth term. So they've given the nth term of the sequence, which is 78 minus 7n. अब मुझे कैसे पता है part A1? एक तो I can see A1 and know that it is an arithmetic sequence. Let's say they hadn't given me A1 and they just give me this sequence. They just give me this टर्म नंबर और द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस का मुझे फॉर्मूला दे देते हैं. मुझे कैसे पता है कि ये फॉर्मूला एक अरिथमेटिक सीक्वेंस का है? बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो दैट अरिथमेटिक सीक्वेंस आर लीनियर सीक्वेंसेस. लीनियर सीक्वेंसेस का मतलब है दैट द पावर ऑफ n इन द nth टर्म विल ऑलवेज इक्वल टू 1. वो 2 नहीं होगी, n स्क्वायर नहीं होगा, n क्यूब नहीं होगा, इट्स ऑलवेज गोइंग टू इक्वल टू 1. सो यू कैन सी ओवर हियर 78 minus 7n है. इट्स अ लीनियर सीक्वेंस, इट्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस. सो यू वांट टू कैलकुलेट द 15th टर्म. अगेन अगर एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d. Now in this question they've already given you the nth term. तो आपको ये फॉर्मूला लगा के nth term निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 15th term निकालेंगे. So 15th term पे n is equals to 15 हो जाएगा. So you will do nth term अगर आपके पास 78 minus 7n है तो 15th term आपके पास हो जाएगी 78 minus 7 into 15 for n is equals to 15, which will equal to -27. So -27 is the answer. In the next part, they're asking to calculate the nth term of the sequence in A2.
तो A1 की nth टर्म उन्होंने ऑलरेडी आपको दे दी थी. A2 की nth टर्म वो आपको निकालने के लिए कह रहे हैं. अगेन A2 इज़ ऑल्सो इन अरिथमेटिक सीक्वेंस बिकॉज यू आर एडिंग 4 ईच टाइम. तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. A is going to be minus 17 which is the first term. अब बिकॉज आपने एक एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, यू वॉन्ट टू कैलकुलेट जस्ट एन एक्सप्रेशन इन विच आप n की वैल्यूज़ डालते जाएं और आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स मिलती जाएं. फॉर एग्जाम्पल लाइक इन द प्रीवियस पार्ट you were given an expression in which you had to put n is equals to 15 to get the answer. In this part you have to calculate that expression. मुझे कोई particular term नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ nth term चाहिए. तो आई एम गोइंग टू कीप n एज n बिकॉज 15th टर्म पे हम क्या करते थे? 15th टर्म पे हम n इज इक्वल्स टू 15 रख देते थे. तो nth टर्म पे हम n इज इक्वल्स टू n ही रखेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू टच n माइनस 1 एट ऑल. कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है? +4. तो nth टर्म is going to equal to minus 17 plus 4n. I am going to open the bracket. Plus into minus is minus, so minus 4. So it is going to equal to 4n minus 21. This is the expression for the nth term of a sequence and that's how you calculate just an expression. अगर वो आपको एक particular term निकालने के लिए कहें तो आप n की जगह उस term number को डाल देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट पार्ट दे वर आस्किंग टू कैलकुलेट द 15th टर्म, तो आपने n इज इक्वल्स टू 15 कर दिया. अगर वो आपको उसका एक एक्सप्रेशन निकालने को कहें लाइक दे वर आस्किंग यू इन दिस पार्ट, यू जस्ट लीव n टू बी एज इट इज़ एंड यू जस्ट फाइंड एन इक्वेशन that will give you the value of each term if you keep putting n is equals to 1, n is equal to 2 and so on. So the answer to this question is going to be 4n minus 21. क्योंकि वो आपसे टर्म नहीं मांग रहे थे, वो आपसे सिर्फ एक एक्सप्रेशन मांग रहे थे जो आपने ऑलरेडी निकाल दिया. The next part they ask you to calculate that for one value of n आपके जो दोनों सीक्वेंसेस हैं उनकी एक टर्म है जो सेम है. एक वैल्यू ऑफ n ऐसी है कि दोनों सीक्वेंसेस की एक nth टर्म सेम पोजीशन पे आती है, उसकी वैल्यू भी सेम है. यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड यू वांट टू यूज़ योर आंसर्स टू b एंड c, ठीक है. आपने पार्ट्स b एंड c यूज़ करने हैं टू कैलकुलेट द nth टर्म. c में आपने क्या निकाला है? आपने 4n माइनस 21 निकाला है एंड द टर्म दैट यू वर द एक्सप्रेशन फॉर द टर्म दैट यू वर गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन वाज 78 माइनस 7n, ठीक है. ये आपके पास थी nth टर्म ऑफ A1 और ये आपने nth टर्म ऑफ A2 निकाल ली. अब सवाल ये कह रहा है कि एक ऐसी वैल्यू n की है जिसमें दोनों की nth टर्म for a particular value of n is the same. So can I say that for a value of n, let me write it down, for a value of n, this part which is 4n minus 21 which is the nth term of A2 will equal to 78 minus 7n which is the nth term of A1, because this is what the question is saying. The question is saying कि एक वैल्यू n की ऐसी है जिस पे दोनों की जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n पे आपके दोनों सीक्वेंसेस की टर्म सेम आती है. तो पहले सीक्वेंस की जो मेरी टर्म थी वो मैंने इससे निकालनी थी, दूसरे की मैंने इससे निकालनी थी. तो अगर वो टर्म ही सेम है आई कैन इक्वेट बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस टुगेदर बिकॉज बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर गिविंग मी द टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस एंड देयर इज़ वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n जिस पे मेरी वो टर्म सेम आती है. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ n. I'm going to take 7n on the other side and this on the other side. 7n जब left side पे आ जाएगा वो हो जाएगा 4n plus 7n is equals to 78 plus 21. 4 plus 7 is 11. 11n is equal to 99. तो n आपके पास आ जाएगा 99 over 11 which equals to 9. For n is equals to 9, both of the terms have the same value. सो n इज़ इक्वल्स टू 9 आ जाएगा. आप करके भी देख लें, जब आप इस इक्वेशन में n इज़ इक्वल्स टू 9 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इट्स गोइंग टू इक्वल टू 4 इंटू 9
minus 21, 9 4s are 36, minus 21 will equal to 15. इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन में which is 78 minus 7n, so 78 minus 7 into 9, 7 into 9 is 63, so you can do 78 minus 63 which is equal to 15 also. So for n is equals to 9, दोनों की term, ninth term 15 है. This is basically what the question is saying. And now the next part you're wanting to calculate the value of the question, value of the nth term जो हमने already is equal to 15 निकाल लिया. You can either do it like this or do it like this. The same term, the nth term, the ninth term is the same for both the sequences, which is 15. Let's look at another question. The question says that you have two sequences and both of them have 1, 3, 5 as their first three terms. In the first sequence, each term is 2 more than the term before it. So 2 more than the term before it, that means your common difference will be 2, because let's say आपकी first term 1 है, second term 3 है. So common difference का मतलब क्या होता है? Common difference is the next term minus the previous term, so 3 minus 1 which is equal to plus 2. So your D is going to be plus 2. उसके बाद A will equal to 1, because the first three terms are 1, 3 and 5, and you want to calculate an expression for n. Like we said, इस पे आप n को नहीं चढ़ेंगे. So the formula is nth term is equals to A plus n minus 1 into D. A आपके पास है 1, n minus 1 and common difference D is 2. I'm opening the bracket, 2n minus 2. The final answer should be 2n minus 1. So an expression for the nth term of the sequence is going to be 2n minus 1. The kth term of this sequence is 841. अब आपकी जो kth term है, आपको नहीं पता कि k की वैल्यू क्या है, लेकिन एक ऐसी term आती है, आपने basically उस term की position निकालनी है कि 841 जब आपके पास इस sequence में आएगी तो 841 की term की क्या position होगी. पहले क्या था, आपको position बताते थे. So let's say they tell you that you have to calculate the 15th term. So that meant that they were giving you the position of the term. That means n is equals to 15 पे आपने term निकालनी है. अब उन्होंने आपको term दे दिया है, उन्होंने आपको 841 term दे दिया है और वो आपको कह रहे हैं कि उस term की उस sequence में position निकाल दें. So it's a slightly different question, but you know that all the terms in this sequence are going to have this as their general expression. ठीक है, सारों की n is equals to 1 पे आपकी आ जाएगी 2 into 1 minus 1, तो n is equals to 1 पे आपकी term 1 आ जाएगी. n is equals to 2 पे it's going to be 2 into 2 minus 1 which is equal to 4 minus 1 which is equal to 3. n is equals to 3 पे which is going to be your third term is going to equal to 5, 3 2 are 6 minus 1 5 and so on. So this expression over here applies to all the terms of this sequence. Now 841 is also a term of this sequence over here, so जाहिर सी बात है कि 841 पे भी अप्लाई करेगा. That means that I can say 841 is equal to 2. Term कौन सी है? It's the kth term, right? So I am going to substitute k instead of n over here. जिस तरह हम 15th टर्म निकालते थे तो आप n की जगह 15 लगा देते थे. अब आपको kth टर्म दी हुई है तो मैं n की जगह k लगा दूंगी. एंड आई बेसिकली वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k. सो k विल इक्वल टू 841 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2k. 842 इज इक्वल्स टू 2k. k will equal to 842 divided by 2 which is equal to 421. So k will equal to 421. Let's look at another question. Here are the first 5 terms of a sequence. So they've given you the first 5 terms of the sequence and they're asking you to write down the next 2 terms. अब सबसे पहले, is this whole sequence, this whole fraction, this whole sequence, is it an arithmetic sequence? Up for it to be an arithmetic sequence, let's say this is D1, let's say this is D2. Arithmetic में हमने यही बात की थी कि हर अगली टर्म एक सेम अमाउंट से ऐड हो रही होती है, एक सेम अमाउंट उसमें ऐड हो रही होती है या एक सेम अमाउंट उसमें सब्ट्रैक्ट हो रही होती है. सो फॉर दिस टू बी इन अरिथमेटिक सीक्वेंस D1 शुड इक्वल टू D2, राइट. लेकिन जब आप D1 निकालते हैं यू गेट 1/8. कैसे?
next term minus the previous term, and when you do the same calculation for d2, you get 1 by 24, which is not the same. d2 is going to be this term minus this term, which I have done over here. तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक arithmetic sequence नहीं है. But now if you just look at the numerator, ठीक है, you will find that the numerators are constantly increasing by 4. ठीक है, 3 से 7 plus 4, 7 plus 4 11, 11 plus 4 15, 15 plus 4 19, and you will find a similar pattern in the numerator as well. The numerator is also increasing by 4. So I have two arithmetic progressions in this one sequence, two arithmetic sequences in this one single sequence. अब the question is write down the next two terms. अब next two terms में आपके पास numerator 19 plus 4 हो जाएगा, denominator में 20 plus 4 हो जाएगा. तो अगली बिल्कुल टर्म आपके पास आ जाएगी 23 over 24. इसी तरह the next term is going to be 23 plus 4 in the numerator, which is 27, and 24 plus 4 in the denominator, which is 28. So the next two terms are 23 over 24, and the next term is going to be 27 over 28. Observe another pattern in the sequence. The numerator is 1 less than the denominator in all the terms. यहाँ पे भी जब आप सेकेंड पार्ट में देखें, इट्स 1199 एंड द डिनोमिनेटर इज़ 1200. तो मैं कोई भी एक प्रोग्रेशन उठाती हूँ, लेट्स से मैं डिनोमिनेटर वाला उठाती हूँ, दैट इज़ 4 8 12 16 20. ठीक है, इसकी जब मैं nth टर्म निकालूँगी सीक्वेंस की, वो क्या हो जाएगा, 4 plus n minus 1 into common difference, which is 4. This is going to equal to 4 plus 4n minus 4, which is going to equal 4n. अब आपके पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो 1200 है. सो यू बेसिकली वांट टू सी कि 1200 किस पोजीशन पे आती है. यू वांट दैट पोजीशन इन विच 1200 comes in the sequence. So I am going to write nth term हमारी this time क्या हो जाएगी, 1200, like we did the previous part. So 1200 is equals to a again, या ये हमने ऑलरेडी इसका निकाला हुआ है 4n. So 1200 is equals to 4, and this time you want to find the kth term. तो k आपके पास आ जाएगा 1200 over 4. 4 1s are, 4 3s are, so k will equal to 300. And similarly you want to find an expression in terms of n for the nth term. अब आपने डिनोमिनेटर का तो ऑलरेडी निकाल दिया, डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 4n. ठीक है, इसी तरह न्यूमरेटर की nth टर्म की एक्सप्रेशन निकाल ले. न्यूमरेटर पे आपके पास सीक्वेंस किस तरह है, इट्स 3 7 11 15 19. सो a इज गोइंग टू इक्वल टू 3. सो nth टर्म इज इक्वल्स टू 3 plus n minus 1 multiplied by your common difference, which is again 4, is going to equal to 3 plus 4n minus 4, which equals to 4n minus 1. Like we said that the numerator is 1 less than the denominator, so even if you did not do the working and you just wrote 4n minus 1, you should get the mark. तो आपके पास nth term क्या हो जाएगी, 4n minus 1 over 4n. The expression for the nth term will be 4n minus 1 divided by 4n. To sum arithmetic sequences for you, सबसे पहले वो होता क्या है, it is when the term to term rule is to constantly add or subtract the same number each time. ठीक है, तो आप हर पिछले नंबर में एक ही नंबर ऐड कर रहे हो to get to the next. उसके बाद you also call them linear sequences. The general formula for an arithmetic sequence is the nth term is equals to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, n is the term number, d is the common difference, and nth term is the term in the sequence at that particular number. You can get 3 types of questions in an arithmetic sequence. Number 1, they can ask you to calculate the nth term of a sequence, which we have already discussed. Number 2, they can ask you to calculate a particular term in the sequence, like the 50th term or the 70th term and so on. We've already discussed questions like this. And they can also give you the term itself, like for example, they've given you 82,
right? And they've given you the sequence and they're asking you to calculate the kth term, which term number is basically at 82. मतलब उस sequence में जब 82 आता है वो किस position पे आता है, and we've already discussed all these questions.